Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbooks for Coaching. I hope all of you are doing really well. देरी नहीं करते हुए फटाफट से let's just quickly get started with today's session. Let's just very quickly dive in. कल हम लोगों ने आपके modern 20th century drama के introduction में we had looked at a couple of important writers. वहीं से ही आज हम लोग continue करेंगे and आज की class काफी brief, काफी crisp रहने वाली है. It's going to be absolutely crisp and brief altogether. As we proceed further. So देरी नहीं करते हुए फटाफट से let's just quickly get started with the session today. I'm just putting your comments on so that we see your comments in a better manner. Good evening, everybody. Good evening, Simar, Zamar, Devashri, Vishnu. Good evening, everyone. Just share it. So. Perfect. So let's quickly get started. Let's just very quickly get started. जल्दी से start करते हैं. Good evening, guys. Good evening, everyone. अच्छा. Now before we get started, आज का like I said, the class is going to be a little relatively briefer. हम लोग आज की class को दो parts के अंदर करेंगे, and that is the reason it's going to be crisp altogether. So let us very quickly get started. Let us very quickly get started with the session today. And before I get started, यहाँ पर कुछ important pointers, कुछ important चीजें that we certainly have to keep in mind. Now, what are certain important things that we have to remember is I'm going to take a quick 5-question oral quiz for all of you. तो यहाँ से let's just quickly get started. पहले सबसे पहले we will be starting on with a quick oral quiz. हम लोग oral quiz से start करेंगे and then we're going to be moving forward. ठीक है? Then we'll be moving forward. So let me just quickly get started with your quiz all together. ठीक है? Let's just quickly get started. राज आरपीएससी के लिए जस्ट इंश्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपरली सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, सारी जो चीजें क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. ऑलराइट. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनिएगा. आपके पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. आर के नारायण एम्प्लॉइज इंडियन मिथ इन विच नॉवल. इंडियन मिथ आर के नारायण कौन सी नॉवल में अप्लाई कर रहे हैं? कौन सी नॉवल में आर के नारायण इज एम्प्लॉइंग the so called Indian myth. आर के नारायण अपने कौन से वर्क में, ये क्विक आइस ब्रेकर क्वेश्चंस हैं. आर के नारायण कौन से वर्क में इंडियन मिथ को अप्लाई कर रहे हैं? Absolutely right. Shrabani has got it right. The man eater of Malgudi is the right answer. क्योंकि this is the season of set exams. Set exams में इस तरह वाले questions आपको बहुत आते हैं. Man eater of Malgudi. काफी सारे आपके जो papers हैं उनको हम analyze कर रहे हैं. जो आपके set के exams के papers हैं उनको हम थोड़े थोड़े questions देख रहे हैं. Marathon के way में भी of course we'll be looking at it. Man eater of Malgudi is absolutely the correct answer. Okay. अच्छा. ये वर्क बताइए किसने लिखा है? ये वर्क बताइए किसने लिखा है? A small place is a work written by. A small place is a work written by. Who's the writer writing a small place? A small place कौन सा writer लिख रहा है? Who's the writer who's writing a small place? ये मैच द फॉलोइंग में आपका एक तरह से क्वेश्चन था. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट when you're looking at most important characters, writers, तो ये important हो जाता है. who's the one who's writing a small place. उसी के अंदर उसी मैच द फॉलोइंग में आपको ये भी क्वेश्चन दिया गया था. वॉस किसने लिखा है? वॉस ऑफ कोर्स आपका पैट्रिक वाइट लिख रहे हैं. And when we are talking about a small place, this is by Jamaica Kincaid. Jamaica Kincaid is writing. Very good, very good. Wilfran, Devashri, Shabani, everybody has got it right. Okay. फ्रांस फैनो ने थर्ड क्वेश्चन. फ्रांस फैनो ने रेचिड ऑफ द अर्थ लिखा है. रेचिड ऑफ द अर्थ का पहला चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रेचिड ऑफ द अर्थ? रेचिड ऑफ द अर्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? सो ऑफ कोर्स वी लुक्ड एट द सेकंड वन, जमैका किनकैट का क्वेश्चन. Right, small place, Jamaica Kincaid. Small place, Jamaica Kincaid is writing. Third is Wretched of the Earth का first chapter. इसका नाम क्या है? Good evening Devashish. Good evening everyone. Good evening Fatima.
जल्दी से बताइए what is the correct answer over here? What becomes the correct answer over here? So when you're looking at the Wretched of the Earth, the Wretched of the Earth का first chapter का क्या part है? Good evening, Simar. Good evening, everyone. Wretched of the Earth के first chapter का क्या part है? First chapter के नाम क्या है? First chapter का नाम क्या है? Concerning violence. ये please याद रख लीजिएगा. Concerning violence. Concerning violence. That is the name of the first chapter of Wretched of the Earth. Wretched of the Earth. Okay. Acha. Now I'm reading out a few lines. You have to tell me where are these lines coming from. Thus, language and literature were taking us further and further from ourselves to other selves, from our world to other worlds. Very beautifully famous lines. I'm repeating these lines again. Thus, language and literature were taking us further and further from ourselves to other selves, from our world to other worlds. To give you a hint, ये गुगीवा थियोंगो लिख रहे हैं. Language के use, it's further taking us, right? It's further taking us. Where is it further taking us? Where is it further taking us? Where is it further taking us? कहाँ पर ये हमें लेके जा रहा है? Where is it further taking us? Where is it further taking us? Where is it further taking us? Absolutely right. Decolonizing the Mind, 1986. Excellent. Who got the right answer? Shabani is on fire today. Very good. Decolonizing the Mind by Gugiwa Thiong'o. गुगीवा थियोंगो बताते हैं कि आप जब कॉलोनाइजर की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं बिकॉज इट्स एक्चुअली टेकिंग अस फादर फ्रॉम आवर ओन सेल्स. ये हमें अपने सेल्स से ही एक तरह से वापस लेके जा रही है. इट्स टेकिंग अस further all together. That is what you're actually able to look at. Fine. Okay, now please remember, यहाँ पर today also we'll talk about a writer, when we look at drama who passed away yesterday itself. But who's this writer who writes about partition and passed away in March 2014? Who's the writer who wrote about partition and passed away in March 2014? Passed away in March 2014. March 2014 में he passed away. March 2014 में, and he was writing partition narratives. Partition narratives as it is एक important topic हो जाता है. Whom are we talking about? Whom are we talking about? He's an Indian writer. He's an Indian writer. March 14. This is the fifth question, and this is actually the last icebreaker question that you're having. What is the correct answer? No, it's खुशवंत सिंह. Partition गिरीश कर्नाड कब हो गया है? तो इसी तरह से ऑफकोर्स हम लोग काफी सारी और चीजें करेंगे. ऑफकोर्स मॉर्निंग में रेगुलरली हम मास्टर क्लासेस के लिए तो मिल ही रहे हैं. कल डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द मास्टर क्लास. कल आपका मास्टर क्लास है. इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट वर्कशीट क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको 20 तो ऑन द स्पॉट करवाऊंगी एंड 5 क्वेश्चंस आई बी गिविंग यू एज होमवर्क एज वेल. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन द मास्टर क्लास फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस एंड मेकिंग श्योर कि आपका पोल भी पता चलता है. Now, today we're going to be talking about, today we will be, of course, आपके सारे के सारे जो tests हैं, those are things that we will be doing simultaneously, parallelly, we will be looking at it. लेकिन आज सबसे पहले, what are we going to be looking at? We'll be looking at a few other writers, to be precise, about 5 important dramatists. टॉप 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे. कल के पार्ट में भी जब हम अमेरिकन ड्रामा करेंगे उसमें भी हम काफी सारे राइटर्स को कवर करेंगे. ओके, so let us very quickly get started. This is the first part. बहुत ही सिंपल रहेगा. In the next 5 minutes we'll be covering this entire part. Okay, who's this writer that we're talking about? Who's this writer? Can anyone identify this writer? ये कौन है? Who is this person that you're all able to see? Who's this person that you're all able to see in front of you? ये कौन है जिनको आप सब देख पा रहे हैं? Who's this person that you're able to actually look at? Good evening, Rashmi. ये कौन है? Sorry. Who's this person that we're talking about? This is a very important person. He was educated at Hackney. He was working at various jobs also. And kitchen sink drama की एक तरह से pioneer माने जाते हैं. No, it's not Ezra Pound. It's not T.S. Eliot. It's not Ezra Pound. It's not T.S. Eliot. He's known for writing plays like Chicken Soup with Barley, Chips with Everything, right? Now you should all be able to recognize Chicken Soup with Barley, Chips with Everything, Kitchen.
तब तो पता चल जाना चाहिए, अब तो बिल्कुल गलत ही नहीं करना चाहिए आपका। द 4 seasons all together. Absolutely right, absolutely right. This is none other than not John Wesker, Arnold Wesker. ठीक है, not John Wesker, this is Arnold Wesker. ये कौन है? ये आर्नल्ड वेस्कर है। दिस इज आर्नल्ड वेस्कर। आर्नल्ड वेस्कर 20th सेंचुरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपकी नॉर्मल लाइवलीहुड से स्टोरीज लेके इट इज कोलैप्सिंग द फोर्थ वॉल, सो इट्स लिटरली गिविंग यू एन एंट्री पॉइंट इनटू द लाइव्स ऑफ कॉमनर्स लाइक योरसेल्फ एंड माई सेल्फ, एंड इट्स ट्राइंग टू टेल यू दैट ये हमें एक्सपोज कर रहा है टू द मेजर कंसर्न्स ऑफ द कॉमन पीपल, राइट? सो दैट इज व्हाट किचन सिंक ड्रामा बाय आर्नल्ड वेस्कर एक्चुअली ट्राइज टू डू। सो आर्नल्ड वेस्कर को जब आप देखते हैं, चिकन सूप विद बार्ले, चिप्स विद एवरीथिंग, 4 seasons, golden city, ये सारे के सारे वर्क्स, they are coming। chips with everything जो था, it was also trying to look at multiple concerns that Arnold Wesker was trying to demonstrate। तो एक चीज आप यहाँ पर क्या देख पाते हो, that Arnold Wesker was trying to use theater to talk about the commonalities, the common life features। तो एक तरह से ये पाइनियर हो गए थे काइंड ऑफ अ ड्राइंग रूम ड्रामा के, रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ ड्रामा जो आपका आ रहा है उसके ये पाइनियर हो गए थे, राइट? So Arnold Wesker kitchen sink drama, that is also a very important component that we have all together। You are able to see angry young man movement से भी associated है, so he's also a person who's actually associated with your angry young man movement as well। तो आपका जॉन ऑसबॉर्न, जॉन आर्डन, हैरोल्ड पिंटर के साथ, हैरोल्ड पिंटर कॉमेडी ऑफ मेनिस के लिए भी जाने जाते हैं। ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट, पीपल हु वर डिससैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एंड द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल हु वर वॉइसिंग देयर ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये आप देख पा रहे थे, ठीक है? सो किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा के एक तरह से पाइनियर है। ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास पीपल की जो लाइफ स्टोरीज हैं, ड्राइंग रूम थिएटर का जो कन्वेंशन है ऑल टुगेदर, तो दैट इज समथिंग दैट आर्नल्ड वेस्कर इज एक्चुअली ट्राइंग टू represent। He is becoming a path breaking example of that sort of drama overall, ठीक है? तो रियलिस्टिक किचन सिंक ड्रामा, एंग्री यंग मैन मूवमेंट को पोर्ट्रे करने वाले, here what are you able to see that Arnold Wesker actually plays a very critical role in this entire aspect, ठीक है? So Arnold Wesker, please ये याद रखिएगा, please keep that in mind। Okay, who's this person that you're able to see? Who's this person that you're able to see? And he's also very important. He was educated at Cambridge. He went to Edinburgh University. So very well educated. He studied architecture actually. और इनके जो plays थे ना काफी ज्यादा, जैसे so he was writing these plays like The Waters of Babylon, which was talking about lottery system। ये कौन है और इनका सबसे important work कौन सा है? Absolutely right, John Wayne, John Brain, Shelley Delaney, they're all a part of your kitchen sink drama। That is correct। Shrabani and Ravi, absolutely right। Shrabani and Ravi, बिल्कुल सही। Who is this person that we are able to see? Who is this person that we are able to see? Like I tell you, live like pigs। live like pigs जो है social conflicts के बारे में बता रहा है। live like pigs, this is the biggest hint। ये इन्होंने लिखा है, live like pigs। live like pigs is a work by him। Whom are we talking about? He's writing it। Even Sergeant Musgrove's Dance, Happy Haven, ये सब इन्होंने लिखा है। And by the way, The Waters of Babylon, Waters of Babylon इनका first important work था। Sergeant Musgrove's Dance, ये भी एक तरह से another important work है that we are looking at। Naina has got it right, it's John Arden। Naina, very good, this is John Arden। Naina got it right, this is John Arden। this is John Arden। John Arden जो है, like I said, Sergeant Musgrove's, so Sergeant Musgrove's Dance is one important work। The Waters of Babylon, The Waters of Babylon, The Waters of Babylon, The Waters of Babylon हो गया। ये सारे आपके important works हैं, ये सारे आपके important works हैं। He is, again a writer। John Arden is a writer who's trying to tell you about the realities। He's trying to literally tell you कि किस तरह से आप ये सारी चीजों को देख पा रहे हैं जो reality में आपका हो रहा है। Political नहीं है। His drama is actually very difficult to categorize per se। He's a 20th century writer। आप इनको absurd writings नहीं कह सकते हैं, आप इनको hardcore realistic writings नहीं कह सकते हैं। There are a lot of elements that you will be able to see। So his writings, what are you able to see that
एक डायडैक्टिज्म, इम्प्रेशनिज्म सबके बीच में आपका आ जाता है। डायडैक्टिक भी है, इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल भी है ऑल टुगेदर। तो दैट इज अनदर थिंग दैट जॉन आर्डन के केस में आप देख पा रहे हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर एबल टू लुक एट, व्हेन वी आर लुकिंग एट जॉन आर्डन्स केस। तो ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा कि जॉन आर्डन इज वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज, difficult to categorize, difficult to bring to a particular compartment, but all of these works are very important that John Arden is actually associated with. आज घर जाके थोड़ा सा और मतलब घर पे ही हैं आप, थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा, एटलीस्ट ऑक्सफोर्ड कंपेनियन से सारे के सारे राइटर्स को आज जरूर देखिएगा, बिकॉज सेकंड पार्ट में हम इनका एलैबोरेशन भी देखेंगे। Who's this writer? The writer associated with the theater of menace, extremely important writer, but yet keeps it very simple. ये कौन है? Who is this that we're talking about? Who is this that we're talking about? Who is this that we're talking about? Harold Pinter is absolutely the correct answer. Harold Pinter is absolutely the correct answer. ठीक है, Harold Pinter आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है. Now, why is Harold Pinter so critically important? Because Room से of course he's starting, birthday party of course becomes important. But what are you able to see that Harold Pinter has got a very different spark, a very very different style of writing. ये एक तरह से theater of absurd का नया modern version लिख रहे हैं. And what is comedy of menace जिसके लिए Harold Pinter is actually associated? What is this comedy of menace that is trying to tell you about the modern mess? Actually, ये जो comedy of menace है, this is so true in our today's life. Everything is like all hustle, and everybody doesn't even knows life's got so chaotic. You don't even have the time to come, sit back, reflect. You don't have the time to think about your next day altogether. तो एक चीज आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? Of course, caretaker हो गया, home coming हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया। याद है आप लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, द रूम इज वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। ये हम लोगों ने क्वेश्चन करा भी हुआ है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल दैट द रूम इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट मेजर वर्क्स ऑफ हैरोल्ड पिंटर, राइट? द रूम इज वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हम हैरोल्ड पिंटर का देख पा रहे हैं। सो कॉमेडी ऑफ मेनिस, राइट? व्हेन वी आर लुकिंग एट कॉमेडी ऑफ मेनिस, देयर इज वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इन कॉमेडी ऑफ मेनिस, दैट कॉमेडी ऑफ मेनिस के अंदर आपके मॉडर्न 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी कंसर्न्स, द मॉडर्न रियलिटी के कंसर्न्स, सिंपल कैरेक्टर्स, प्लेटिट्यूड्स, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, एवरीथिंग एक्चुअली गेट्स डिपिक्टेड। सो रूम से लेके, बर्थडे पार्टी से लेके, होम कमिंग से लेके, सारे के सारे प्लेस जो हैरोल्ड पिंटर लिख रहे हैं, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, राइट? दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। नो मैन्स लैंड हो गया, बिट्रेयल हो गया, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेस दैट आर ट्राइंग टू हैव these just like a theater of absurd, small character entourage, but very powerful themes in terms of telling you about the 20th century reality. So, of course, Harold Pinter, the writer associated with your comedy of menace, Harold Pinter is a very important 20th century writer, जो कि आपको certainly consider करना है. Now, who is this person, that we're talking about, this 20th century writer that we're looking at? This is again, let me just tell you, creates the character of Jimmy Potter. To give you a hint, creates the character of Jimmy Potter, creates the character of Allison, creates that famous scene where Allison is trying to iron the creases, symbolic of ironing the various knots that are there in her own life and relationship altogether. Who's this person that we're talking about? A commercial artist, clearly. Sharbani has got it right. This is John Osborne. This is John Osborne. Look Back in Anger इनका एक बहुत ही important work है. Now, whenever we are talking about John Osborne, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो certainly याद रखनी है about John Osborne's case, ठीक है? There are a few things that you must keep in mind. What are those things?
when you are looking at John Osborne's character. देखिए, John Osborne as the playwright is of course introducing your kitchen sink drama, angry young man movement, concerns, angriness and angst जो unemployed लोग हैं उनके बारे में you are able to see that he's able to talk about it. But it's just not right. आपको ये चीज याद रखनी है. It's just not look back in anger that Osborne has created. He's also written works like Luther, which have become very popular. He's also written Epitaph for George Dylan. तो ये सभी इनके lesser known works हैं. But of course, look back in anger, though it's a path-breaking 20th century creation that Osborne actually creates a cult figure and a cult followership. The dissatisfaction, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कि कल्चरल स्टडीज के पाइनियर कौन है, कल्चर स्टडीज के एक तरह से पाइनियर अगर आप देखोगे तो इस तरह के राइटर्स हैं, वो आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग क्लास कंसर्न्स, who are talking about the angry young men movement, who are talking about what are the problems that these people are actually facing. Okay, all right. Now this unfortunately, this is of course an unfortunate update. We are sitting on 5th March. The person that we're talking about died on 3rd March 2024. Right, standing not permitted. As you're able to see at the back, who's this person that we're talking about? It's really unfortunate. It's really unfortunate that the person died. But North London, East Anglican laborer, सब कुछ, he was born in northern part of London, very famously known for multiple works that he has written, ठीक है, and his theater is actually very critical of the capitalistic society. Who are we talking about? इन्होंने बहुत ही famous works लिखे हैं. इन्होंने बहुत ही famous works लिखे हैं, but he died, like I said, he just died 2 days ago. He passed away 2 days ago. Very famous staunch critique of capitalistic movement that you're able to see. Injustices को एक तरह से ये बताते हैं. No, it's not Raymond Williams. Not Raymond Williams. He's writing, works like The Sea, The Fool's Summer, The War Plays. The War Plays इनके बहुत ही popular माने जाते हैं. The war plays that he has written, he's just passed away. Even अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जैसे ट्रिब्यून हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, या फिर गार्डियन हो गया, कई सारे आपको इस तरह के राइटर्स की ओबिचुरी जो मिलेगी, उसमें भी आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें भी आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलता है. When you are trying to study these kinds of writers, whom are we talking about? No. This is Edward Bond. This is Edward Bond. Please याद रखिएगा, Edward Bond. ये सारे के सारे राइटर्स जो हम आज कर रहे हैं, I will be elaborating tomorrow second part के अंदर. This is just like a sneak peek altogether. Edward Bond is the person who passed away unfortunately. Anti-capitalistic writings हैं इनकी, anti-capitalism, right? Anti-capitalistic, ये आपको याद रखना है. Anti-capitalistic writings, that is what you're able to see. So please remember that. Very outspoken critique that you're able to see. He says that we have all become victims of cheap consumer community. We are all driven. What are we really waiting for to spend our money? So Edward Bond जो है, he unfortunately passed away, in a very important 20th century writer that we're talking about. Last but not the least, my personal favorite or in 20th century pantheon of dramatists जो हम कवर कर रहे हैं, कल इन सबका हम लोग in detail analysis भी देखेंगे. A person who was educated in Montreal as well as Oxford. Who are we talking about? Very radically feminist plays. ये काफी सारे वर्क्स लिखे हुए हैं. If I tell you one work, I think you'll be able to mention that. Cloud9. Cloud9 is a very popular work written by this writer. Cloud9 is a very important work. Light Shining in Buckinghamshire, that is also there. Victorian Africa के बारे में है. Who is this that we're talking about? Our last writer for today. Cloud9 इन्होंने लिखा है. Cloud9 is a work that has been written by this writer, Montreal, Oxford, feminist writings. Owners is a satire on property and capitalism. Owners पे इनका एक play है जो ये लिख रहे हैं. Carl Churchill, excellent. Ravi Pandey has got it right. This is Carl Churchill. So Carl Churchill, so all of these, Edward Bond critiquing capitalistic society, Osborne talking about the working class movement, even when you talk about Harold Pinter, the comedy of menace that is being introduced, या फिर आपका John Arden, Arnold Wesker. So all of these people are trying to talk about against capitalism,
how capitalism favors a few, not everybody, how there is unequal distribution altogether. They're trying to literally highlight all these concerns. ये सारे के सारे concerns ये सब writers एक तरह से highlight कर रहे हैं. Okay, top girls, absolutely right, serious money. आज का आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, कल हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे. उल्टा एक क्विज भी के फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिव्यू, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिव्यू, कवर कीजिएगा. जो सारे के सारे पॉइंटर्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं उनको अच्छी तरह से देखिएगा, उनको अच्छी तरह से कवर कीजिएगा. आई कम दिस साइड सो दैट यू कैन सी दिस, राइट. जस्ट कवर इट एंड टू एंड प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग क्रिस्प कंसाइज नोट्स, बिकॉज यहीं से ही विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो. कल हम लोग इसके सेकंड पार्ट में अमेरिकन ड्रामा को देखेंगे. सो आज और कल इन कुछ कुछ राइटर्स के इलैबोरेशन भी मैं आपको थोड़े थोड़े लिखवाने वाली हूँ, ठीक है. Alright, so on that note, I hope you're able to review, you're able to revise your 20th century drama properly. In case कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, please feel free to let us know about it. I'll catch up with all of you tomorrow. Don't forget to tune in for your masterclass at 9 o'clock. Like I said, we'll be looking at 20 questions and 5 questions for your homework tomorrow. कल आपका 9 बजे जो है, ठीक है. So don't forget to look at it, ठीक है. Don't forget to look at it. Thank you so much, Bilfran, Shabnam. Thanks everyone. Right, please make sure that you complete your homework, and in case if there are any other doubts that you're having, either put it in the comment section or you can mail it to me as well. Fine. Thanks so much everyone for joining. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you tomorrow. Thank you, Rashmi, Ravi, Shabnam, Wilfran, new to take care, Fatima, Devashish. Fatima, like I said, as CMO, please don't forget to like and share it with others as well. Fine. Naina, Simran, thanks everyone. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you tomorrow. Don't forget to tune in for the masterclass. Thank you.